Processing of data. Welcome to Management IQ. Processing of data definition. Data processing is generally the collection and manipulation of items of data to produce meaningful information. मतलब कि कंप्यूटर द्वारा डाटा में मैनिपुलेशन, इसमें रॉ डाटा को मशीन रीडेबल फॉर्म से सीपीयू के माध्यम से डाटा का फ्लो और आउटपुट डिवाइस में मेमोरी और आउटपुट का ट्रांसफॉर्मेशन या फॉर्मेटिंग शामिल होता है. एनालिसिस ऑफ डाटा. The systematic application of statistics and logical techniques to describe the data scope, modelizes the data structure, condense the data, illustrate via image, table, and graphs, and evaluate statistical inclination, probability data, and derive meaningful conclusion is known as data analysis. मतलब कि डाटा स्कोप को डिस्क्राइब करने के लिए स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल टेक्निक का सिस्टमैटिक एप्लीकेशन, data modifying structure, condensing the data representation via illustration, image, tables, and graph, calculate statistical inclination, probability data, and derive meaningful conclusion is known as data analysis. Methods of data analysis. So there are two types of method, qualitative and quantitative method. Methods of data analysis. Qualitative analysis. This approach mainly answers questions such as why, what, or how. Each of these questions is addressed via quantitative techniques such as questionnaire, attitude, scaling, standard outcome, and more. Such analysis is usually in the form of text and narrative, which might also include audio and video representation. यह अप्रोच मेनली और मुख्य रूप से वाई, वॉट और हाउ जैसे क्वेश्चन के जवाब देता है. इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन का क्वांटिटेटिव टेक्निक जैसे कि क्वेश्चनर, एटीट्यूड स्केलिंग, स्टैंडर्ड आउटकम एंड मोर इज एड्रेस थ्रू. इस तरह का एनालिसिस यूजुअली टेक्स्ट एंड नरेटिव के रूप में होता है, जिसमें ऑडियो और वीडियो रिप्रेजेंटेशन भी शामिल होता है. Moving on to the next topic, which is quantitative analysis. Generally, this analysis is measured in terms of number. The data here present themselves in terms of measurement scale and extend themselves for more statistical manipulation. इस एनालिसिस को नंबर के टर्म्स में मेजर किया जाता है. यह डाटा खुद को मेजरमेंट स्केल के रूप में प्रेजेंट करता है और अधिक स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशन के लिए खुद को विकसित करता है. एनालिसिस ऑफ वेरिएशन और ANOVA. एनालिसिस ऑफ वेरिएशन या स्टैटिस्टिक में यूज़ किए जाने वाला एक एनालिसिस टूल है जो डाटा सेट के अंदर पाई गई ओवरऑल वेरिएबिलिटी को दो भाग में डिवाइड करता है, सिस्टमैटिक फैक्टर एंड रैंडम फैक्टर्स. दिए गए डाटा सेट पर सिस्टमैटिक फैक्टर का स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस होता है जबकि रैंडम फैक्टर नहीं होता है. यह एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो सेपरेट करता है ऑब्जर्व्ड वेरिएशन डाटा इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स टू यूज फॉर एडिशनल टेस्ट. One way, there are two types of analysis of variation, which is one way and two way. In this one way analysis of variation is used for three or more groups of data to gain information about the relationship between dependent and independent variables. A one-way ANOVA evaluates the impact of soul factor on a soul response variability. It determines whether all the samples are same. The one-way ANOVA is used to determine whether there are statistically significant difference between the meanings of the three or more independent or unrelated groups. Two-way analysis of variation. A two-way analysis of variation is an extension of one-way. With a one-way, you have one independent variable affecting a dependent variable. With a two-way ANOVA, there are two independent. For example, a two-way ANOVA allows a company to compare worker productivity based on two independent variables, such as salary and skill test. It is utilized to observe the interaction between two factors and test the effect of the two factors at the same time. मतलब कि इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द वन वे ANOVA. वन वे के साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्टिंग और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बट टू वे ANOVA देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो द ओवरऑल कंक्लूजन फॉर वन वे एंड टू वे इज दैट वन वे सोल और सिंगल रिस्पॉन्स वेरिएबल पर सोल फैक्टर के इम्पैक्ट को इवेल्यूट करता है.
यह डिटरमाइन करता है कि क्या सभी सैंपल सेम है। वन वे ANOVA का यूज यह डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है कि 3 या अधिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के बिटवीन द मीन स्टैटिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। ऑन द अदर हैंड, two-way ANOVA is used for two independent variable. Moving on to the next topic, which is chi-square test. यह important test है among the several tests and significant developed by statistician. ये कार्ल पियर्सन के द्वारा 1900 में डेवलप हुआ। यह एक प्रकार का नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि not based on any assumption or distribution of any variable. This statistical test follow a specific distribution known as chi-square distribution. आमतौर पर जो टेस्ट हम लोग यूज करते हैं टू मेजर द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज ऑब्जर्व एंड व्हाट इज एक्सेप्टेड accordingly to an assumed hypothesis is called the chi-square test. Application of chi-square test. So there are three types of application in this, which is goodness of fit to distribution test of independent say of attributes and test of homogeneity. So we are going to deal with only goodness of fit to distribute. Goodness of fit to distribute. A goodness of fit to distribute or X2 test formula of goodness to fit is x whole square is equal to sigma bracket observed plus accepted whole square divided by accepted. This test enables us to see how well does the assumed theoretic distribution fit to the observed data. The x2 calculated is greater than x2 tabulated with n-1 differences, then null hypothesis is rejected, otherwise accepted. And if null hypothesis is accepted, then it can be concluded that the given distribution follow theoretical distributions. Moving on to the next, which is multivariate data analysis. ये एक टाइप का statistical analysis होता है that involves more than two dependent variables resulting in a single outcome. इन रियल लाइफ सिचुएशन ऐसा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं वेदर का। किसी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर डज नॉट सोनली डिपेंड ऑन द ऑनगोइंग सीजन, इंस्टेड मेनी अदर फैक्टर प्ले देयर स्पेसिफिक रोल्स लाइक ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, एक्सेट्रा. Moving on to the next, which is advantages and disadvantages of multivariate data analysis. So its advantage is first, helps the analysis to search for factors that can help in drawing accurate conclusion, because as this data deals with the multivariate variable, all the variables can either be independent or dependent of each other. This helps the analysis to search for factors that can help in drawing accurate conclusion. The second one is the drawn conclusion are closer to real life situation as the analysis is tested into real life situation. Disadvantages of multivariate data analysis is it includes many complex computation and hence can be laborious. The analysis necessitates the collection and tabulation of a large number of observations for variable various. This process of observation takes a long time. So thank you for watching the video. Hope you like it.